So this is part two of the previous class. We were discussing about the academic vocabulary, and I was giving you some examples from different disciplines. So far, we have discussed physics, biology, and psychology. These are disciplines. These are subjects. These are different subjects, and each subject has its own terminology. As I discussed with you previously, that every subject has its own glossary, its own vocabulary, and this own vocabulary is called academic vocabulary. So when we have complex ideas and we have complex concepts, so we use academic vocabulary to explain those things. Without academic vocabulary, we cannot explain complex concepts. So let us continue. Can you, Imran Khan, please share the literature comment so that we can go ahead. My request to you guys is that please start writing academically. What does it mean? Evidence based presentation. Give references, give technical language, technical treatment, explain the things, define the things. So, this way you will be able to write in a more proper way. So, when you write like a scholar, you have to use academic vocabulary. Common writing, that is important for grammar. That is important for only grammar. That your grammar is correct. You are not making grammatical mistakes. That is for common writing. But the next level is academic vocabulary, that you are discussing complex topics of your subjects. For example, in literature, as Imran Khan has given us a comment, in literature we have a word diegetic. That is a academic. That is an academic vocabulary. So we say elements of a story that belong to the world of the narrative itself, as opposed to the narrator's commentary. The diegetic elements in a novel include the dialogue, actions, and thoughts of the characters. So diegetic, it's a beautiful way to write. Okay, elements of a story that belong to the world of the narrative itself as opposed to the narrator's commentary. अब जो वो है अपना जब हम कोई स्टोरी बनाते हैं तो स्टोरी जो है हमारे जो नरेटर है जो बयान करने वाला है उसके ख्यालात पे वो बेस होती है लेकिन डाइजेटिक में ये है कि जो करेक्टर है मसलन कोई लड़का है लड़की है कोई विलन है हीरो है तो उनके ख्यालात को से जब आप स्टोरी बनाते हैं सो दैट इज कॉल्ड डाइजेटिक और इसमें डायलॉग है एक्शंस है थॉट्स ऑफ द कैरेक्टर्स जो किरदार है उनके थॉट्स सो दिस ये जो है इस किस्म की राइटिंग को क्या कहते हैं डाइजेटिक नाउ इकोनॉमिक्स में हमारे पास एक टर्मिनोलॉजी है एक एकेडमिक वोकैबुलरी है पारेटो एफिशिएंसी a state of allocation of resources where it is impossible to make any one person better without making someone else worse off. Achieving Pareto efficiency is a theoretical goal in economics as some level of inequality is often present. अब पारेटो प्रिंसिपल जो है एफिशिएंसी ये क्या है ये है कि भाई किसी का नुकसान होगा तो आपका फायदा होगा जब किसी का नुकसान ही नहीं हो रहा तो विन विन सिचुएशन नहीं होता ठीक है अभी आप लोग अपना नुकसान करोगे कोई और कहीं और से कोई दूसरा काम छोड़ोगे इधर आके मेरे सामने बैठोगे तो मेरा फायदा होगा एज ए टीचर और मैं अपने बाकी सारे काम छोड़ के इधर आके आपको टीचिंग करूंगा तो आपका फायदा होगा तो इसको कहते हैं पारेटो एफिशिएंसी अ स्टेट ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज where it is impossible to make any one person better without making someone else worse off. तो जब आप इस चीज को खत्म करते हैं
So then it becomes efficiency. Pareto efficiency, a state of allocation of resources where it is impossible to make any one person better without making someone else worse off. मैं भी इस काम को मुफीद समझता हूं और आप भी इस काम को मुफीद समझते हैं. ना आपका भी नुकसान होता है, ना मेरा नुकसान होता है. मेरा भी फायदा है, आपका भी फायदा है. इस चीज को एफिशिएंसी कहते हैं, पारेटो एफिशिएंसी. So these are just a few examples, and each discipline has a vast array of advanced terms for specific concepts. The key is to understand how these terms allow for precise communication and nuanced discussions within a particular field. Here are some activities that involve analyzing academic texts, identifying and defining discipline specific vocabulary, and practicing using these terms in your own writing. Activity number 1, vocabulary detective. Materials, academic text, journal, article, textbook, chapter, highlighter, notebook. तो अब मेरे पास कोई स्टूडेंट नहीं है सही वाले, वरना वो सेफ टू में आके अपनी चीज़ें दिखा के देखो, दिस इज द बुक ऑफ रिपब्लिक, रिपब्लिक बाय प्लेटो. ये प्लेटो की किताब है रिपब्लिक. अब अफलातून है तो उसकी किताब होगी तो टेक्निकल, उसमें ज़रूर जो है एकेडमिक वोकेबलरी होगी. ये मेरा कलम है, ये मेरा हाईलाइटर है. अब मैं उसको बुलंद आवाज़ से पढ़ रहा हूँ इस किताब को. पहला पैराग्राफ मैंने पढ़ लिया, इसमें कौन कौन सी वोकेबलरी के वर्ड्स मुझे मिल गए, मुझे ये अल्फाज जो है एकेडमिक वोकेबलरी मिल गए. ठीक है. आप जो है या कोई किताब आप सजेस्ट करें कि आज मैंने रिपब्लिक पढ़ा है, कल कोई और किताब आप देखें, तो वो किताब उठा के आप इस तरह मेरे तरह सामने बैठ के किताब उठाए, उसको पढ़ना शुरू करें और उसमें से मुख्तलिफ जो है वो अल्फाज निकाले, एकेडमिक वोकेबलरी जो है वो निकाले. इसी तरह जो है आप मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज जो है वो यूज़ कर सकते हैं. तो ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ है, इसकी एग्जाम्पल्स आपके सामने है. सो द bottom line means the basic point is that you start reading original difficult books written by original writers. जो ओरिजिनल राइटर्स है, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स है या कंपलसरी सब्जेक्ट्स है, उसमें एक किताब सेलेक्ट करके ओरिजिनल, जो बिल्कुल अंग्रेज़ किस्म का इंसान हो. मतलब पाकिस्तानी जो है वो ओरिजिनल किताबें नहीं ले सकते, पाकिस्तानी में सलाहियत है ही नहीं. पाकिस्तानी जो है वो तो मौलवी को फॉलो करते हैं, तो मौलवी को जो फॉलोअर्स है वो कभी भी ओरिजिनल काम नहीं कर सकता, नेवर एवर. तो इस वजह से पाकिस्तान में जो है एक अल्लामा इकबाल था, वो भी 1938 में मर गया और उसने भी इधर उधर से सारे छापे मारे थे. तो यहाँ तो ओरिजिनलिटी है ही नहीं, तो एकेडमिक वोकेबलरी जो है वो कहाँ से आएगी. लेकिन जो वेस्टर्न राइटर्स है, ब्रटन रसल की किताब उठाए, या जो है डेकार्ट की किताब उठाए, नीत्शे की किताब उठाए, किसी बंदे का किताब उठाए, इंडियन भी हमसे बहुत बेहतर है एकेडमिक बुक्स में, तो उसको उसकी रीडिंग करे और उसके जो है वो सारा वो डिस्कशन करे, क्वेश्चंस करे. और कुछ भी आपसे नहीं हो सकता तो कम से कम एक पेज के फोटोकॉपी जो है, एक इमेज वहाँ शेयर करे और उसमें अंडरलाइन करे कि ये नई एकेडमिक वोकेबलरी जो है मैंने सीखी है. So if you have any questions, so please ask. Otherwise, I will leave you for tomorrow's activities in safe 2. आज जांजेब खान ने कोशिश की, पता नहीं किसी ने उसको घास डाला कि नहीं डाला, लेकिन जांजेब खान ये आपके अपने प्रैक्टिस के लिए है, लोगों के लिए नहीं है. खुद अपने आप को बोल्ड करो, कॉन्फिडेंट करो, डिस्कस करो, कैमरे को फेस करो और टॉपिक्स जो है वो छेड़ो, आर्गुमेंटेटिव टॉपिक्स बनाओ, एटाइमोलॉजी बनाओ. तो कल हमारा मतलब ये ख़त्म हो रहा है वोकेबलरी का कोर्स, तो उसमें जो है आपको मैंने सिनोनिम्स, एंटोनिम्स उस पर कहा, फिर जो है आपको एटाइमोलॉजी पे कहा, ईडियम्स पे कहा. आज हमने एकेडमिक वोकेबलरी की बात की. एकेडमिक वोकेबलरी का मतलब है टर्मिनोलॉजी, टर्म्स, टेक्निकल लैंग्वेज, इसकी हमने बात की. सो आई होप दैट स्लोली एंड ग्रेजुअली यू विल बी बिल्डिंग अप एंड यू विल बी गोइंग टू द नेक्स्ट लेवल. थोड़ा सा हलचल जो है पैदा करो, मायूस नहीं हुआ करो, लोगों से मायूस मत करो कि यार किसी ने मुझे तारीफ नहीं की तो इस वजह से मेरा काम गलत है. नहीं, आपको खुद पता होना चाहिए कि आपका काम गलत है या ठीक है. लोग आपकी झूठी तारीफ ही करते हैं, आपको हवा पे चढ़ाते हैं, आपको कुछ नहीं आता और आपको बड़ी शाबाश देते हैं.
تو ان لوگوں سے بچو. اپنے آپ کو سیلف ایگزامن کرو کہ کیا یہ میرا کام ٹھیک ہے. اگر آپ کا خود آپ کو کہتے ہیں کہ ہاں یہ ٹھیک ہے, یہ آپ کے لیے بہترین سیٹسفیکشن ہے. لوگوں سے ویلیڈیشن مت لیا کرے. لوگوں نے ویلیڈیٹ کیا, شاباش کہا تو آپ خوش ہو گئے, کسی نے شاباش نہیں کہا تو آپ خوش نہیں ہوئے. دس از انفیریٹی کمپلیکس اینڈ دس از ناٹ normal correct behavior. So see you now in LPCS, please.